the embryonic development. Under the embryonic development, we will discuss about the different types of eggs. And हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ह्यूमन के रिस्पेक्ट में ही डिस्कशन करेंगे. बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा आउटसाइड ह्यूमन बीइंग नहीं जाएंगे, सीधा हम लोग ह्यूमन बीइंग के ही रेस्पेक्ट में बात करेंगे. So it is types of egg, human characteristics. Number one is ह्यूमन बीइंग के केसेस में होता है माइक्रोलेसिथल और ओलिगोलेसिथल. And what is the definition of oligolecythal or microlecythal egg? A very small quantity of yolk. Very small quantity of yolk. And remember, the process of synthesis of yolk is called as vitellogenesis. Process of synthesis of yolk is called as vitellogenesis. ना डिपेंड करता है कि विटेलोजेनेसिस किस में ज्यादा है किस में कम है. अगर विटेलोजेनेसिस प्रोसेस लंबा होगा तो यॉक क्वांटिटी क्या होगा ना मोर होगा. तो यहाँ पे तो मैंने खाली माइक्रोलेसिथल लिख दिया. ह्यूमन के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं. और क्या क्या टाइप हो सकता है ना, मेगालेसिथल, पॉलीलेसिथल और मेजोलेसिथल. मेगालेसिथल पॉलीलेसिथल मींस यॉक क्वांटिटी इज वेरी हाई. एंड अगर मॉडरेट क्वांटिटी होगा तो मेजोलेसिथल. हम लोग क्योंकि ह्यूमन के बेसिस में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए सिर्फ माइक्रोलेसिथल मैंने लिखा है. दोनों पाइप समझ में आ गया. ह्यूमन के केसेस में एक्चुअली हम लोग उसको माइक्रोलेसिथल नहीं बोलते. इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज कॉल्ड एज एलेसिथल. नो और that is negligible. Amount of yolk and negligible amount of yolk it is found in case of human. तो ह्यूमन बीइंग में आप बेटर एलेसिथल बोले. ह्यूमन बीइंग के केस में माइक्रोलेसिथल एग्जैक्टली नहीं है. ह्यूमन बीइंग के केस में इट इज एलेसिथल because the amount of yolk is so less that it cannot be treated as a microlecythal although it is treated as a एलेसिथल. नंबर 2 में आते हैं. ह्यूमन के एक के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं. नंबर 2 इज, आप लोग जानते हैं ये जो यॉक का अमाउंट है ये तो क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हो गया. अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं. ना ह्यूमन बीइंग के केसेस में दैट विल बी आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल.
आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल, ये था माइक्रोलेसिथल और एलिगोलेसिथल। मीन्स yolk is thin and uniformly distributed in cytoplasm. तो इसका अपोजिट क्या होगा ना, मैंने ह्यूमन बीइंग का लिखा है इसीलिए सिर्फ आइसोलेसिथल लिखा। इसका और क्या कैटेगरी हो सकता है ना, इफ द यॉक इज प्रेजेंट ओनली एट द सेंटर देन इट इज सेंट्रोलेसिथल, इफ द यॉक इज प्रेजेंट इन द वन साइड देन इट इज कॉल्ड एज टेलोलेसिथल। बात को समझे? तो हम लोग जो बर्ड्स का एग खाते हैं, पोल्ट्री एग, उसमें यॉक क्या होता है, साइड में होता है कि नहीं, सो टेलोलेसिथल। अब अगर इंसेक्ट का एग देखेंगे, कॉकरोच की बात कर रहे हैं, कॉकरोच में ये सेंट्रोलेसिथल वर्ड आएगा। In case of cockroach, because it is insect, so in case of insect, the egg is what? Centro, as the yolk is present in the center. But as because we are discussing the human being, only human character. So this is all about the type of egg, एक तो amount, दूसरा हो गया distribution. Now we are coming to yolk. Sorry, that is cleavage. What is the meaning of cleavage? Now it is a repeated mitotic division of zygote. It is a repeated mitotic division of zygotes to form or to produce multicellular blastula. So what is the result of cleavage? A zygote which is unicellular will be changed into multicellular blastula. That process is called as what? Cleavage. अब cleavage का बहुत सारे characteristics है. Characteristics number 1. Unicellular zygote changed into multicellular blastula. Number 2. This is the mitotic phase. With a mitotic division, right? Mitotic division with interphase but without growth phase. समझे? यहाँ पे आप लोग सेल डिवीजन पढ़े हैं। सेल डिवीजन में जो एस फेज होता है, G1 होता है, G2 होता है, M फेज होता है, पढ़े हैं आप लोग? मतलब इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। तो यहाँ पे माइटोटिक फेज तो है ही, माइटोटिक डिवीजन में माइटोटिक फेज है बट इंटरफेज विदाउट growth. So in between the two mitotic division of cleavage, there is no growth. So the cell number in the subsequent division increase, but the size decrease. क्योंकि जाइगोट में जितना साइटोप्लाज्म था, अब वो डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म हाफ हो गया। तो जो दो सेल बनेगा उस सेल का साइज क्या होगा? हाफ ऑफ द जाइगोट होगा। नंबर लेकिन इंक्रीज किया 2, फिर 4 होगा तो 1/4 हो जाएगा साइटोप्लाज्म, फिर 8 होगा तो 1/8 हो जाएगा साइटोप्लाज्म। तो विद द सब्सिक्वेंट डिवीजन द साइज ऑफ द एम्ब्रियो विल रिमेन कांस्टेंट,
entire size of the embryo will be remain constant. Externally, number of the cell increase or blastomere number will increase, but the size of the blastomere decrease. समझ में आएगी नहीं? इसीलिए हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का रेशियो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा. जाइगोट में 1 न्यूक्लियस 1 साइटोप्लाज्म, राइट? सेकेंड में क्या होगा? 1 माइटोटिक डिवीजन के बाद फर्स्ट क्लीवेज के बाद क्या होगा ना? 2 न्यूक्लियस लेकिन 1 साइटोप्लाज्म. देन 4 न्यूक्लियस 1 साइटोप्लाज्म. देन 8 न्यूक्लियस 1 साइटोप्लाज्म. तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो धीरे धीरे इंक्रीज कर. साइटोप्लाज्म का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. अगर साइटोप्लाज्म का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो नॉर्मल शेप एंड साइज ऑफ द एम्ब्रियो विल रिमेन कांस्टेंट. मींस जाइगोट से लेके ब्लास्टुला तक आप अगर देखेंगे एक्सटर्नली तो मॉर्फोलॉजी रिमेन्स सेम. आप इंटरनली देखेंगे तभी पता चलेगा कि इसका स्टेज क्या है, whether it is 2 celled, 4 celled, 8 celled की 16 की 32 celled. But externally you cannot identify which is zygote and which is blastula, because externally it is same, because there is no cytoplasmic displacement. So the morphology of the embryo remain constant from zygote to blastula. Number 3. Number of blastomere increases, but size decreases. No cytoplasmic growth and displacement. So normal size of embryo remain constant. It is from zygote to blastula is of same size. Number 5, nucleo cytoplasmic ratio increases gradually. नंबर 6, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डिवाइडिंग सेल में न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, पढ़े हैं कि नहीं? न्यूक्लियस अगर डिसअपियर हो गया तो नॉर्मल और फ्रेश आरएनए सिंथेसिस नहीं होगा. So that is why during the cleavage there is no fresh synthesis of mRNA. But protein synthesis will continue. जो बचा हुआ mRNA वो तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा. तो nucleolus is absent. So no fresh synthesis of RNA, but protein synthesis continues. Complete है. So we are coming to the type of cleavage. एंड यहाँ पे हम लोग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक से डिस्कशन करेंगे. बाकी मैं खाली आपको बोल दूंगा, लेकिन उसको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है.
Types of cleavage. Number 1. Holoblastic equal. तो यहाँ पे भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कसिंग कर रहे हैं. मोस्टली ह्यूमन बीइंग के केस में होलोब्लास्टिक इक्वल होता है. एक दो फेज भी ऐसे आता है जहां पे होलोब्लास्टिक अनइक्वल भी होता है. होलोब्लास्टिक इक्वल मींस cell divide entirely. Cell divide entirely to central axis. Result into equal blastomeres. देखिए यहाँ पे सपोज टू दिस इज अ सेल, ये उसका सेंट्रल एक्सिस है. तो ये क्या होगा ना, एनिमल पूल वेजिटल पूल एक्सिस में ऐसे डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करने से क्या होगा ना, दो सेल में कन्वर्ट हुआ एंड दैट इज टू फॉर्म. तो टू सेल एंटायरली डिवाइड हुआ कि पार्शियली डिवाइड हुआ. एंड एंटायरली डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं होलोब्लास्टिक. अगर ये सेंट्रल एक्सिस के थ्रू पास करता है तो उसको रिजल्ट इनटू इक्वल ब्लास्टोमेर, सो कॉल्ड एज इक्वल. अगर ये entirely divide होता but doesn't passes through the central axis, although it is passes little away from the central axis, then it will produce the unequal blastomere called as holoblastic unequal. ठीक है. लेकिन अगर ये सेल entirely divide नहीं होता है, suppose I am telling this is the cell and यहाँ पे ये देखिए डिवीजन जो हुआ entirely नहीं हुआ, partially divide हुआ, ये entirely divide हुआ, then it is called as meroblastic. Then it is called as what? So दो टाइप का cleavage division है on the basis of the what way the cell furrow is passes. Cell furrow pass करेगा अगर entirely तो holoblastic, अगर partially divide किया तो meroblastic. अगर ये central axis में पास करता है तो holoblastic equal, अगर ये little away from central axis पास करता है तो holoblastic unequal. बात को समझे. अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं कि आपको कैसे याद रखना कि ह्यूमन बीइंग के केस में आप रट्टा नहीं मारेंगे कि ये होलोब्लास्टिक इक्वल है. ये कंसेप्ट है कि सेल फ्यूरो, इसको बस समझिए, ये सब लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, खाली याद रखिएगा ये कंसेप्ट. सेल फ्यूरो विल पासेस ओनली व्हेन देयर इज नो यॉक इज प्रेजेंट. मतलब जहां पे यॉक प्रेजेंट होगा वहां पे सेल फ्यूरो पास नहीं करेगा. तो ह्यूमन बीइंग के केस में मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, एग इज माइक्रोलेसिथल, दैट इज एलेसिथल एंड आइसोलेसिथल. मतलब अमाउंट ऑफ यॉक इज वेरी थिन, यूनिफॉर्म एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक. तो सेल फ्यूरो पास करेगा एंटायरली, इसीलिए होलोब्लास्टिक हुआ. समझेगी नहीं. एंड इसीलिए इक्वल हुआ. अगर ये मेसोलेसिथल एग होता है जैसे कि फ्रॉग के केस में होता है तो वो हो जाएगा होलोब्लास्टिक बट अनइक्वल. अगर ये मेगालेसिथल या पॉलीलेसिथल एग होता तो क्या हो जाता, मेरोब्लास्टिक. बिकॉज द यॉक तो बहुत बड़ा अमाउंट है ना, तो यॉक के थ्रू तो पास नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे आपका यॉक है. Here the yolk is present and that is the reason why the cell furrow could not passes to the yolk to divide the cell entirely. That is why it results into what na meroblastic. अब मेरोब्लास्टिक भी दो टाइप का है. अगर ये पूरा साइड में है, मतलब टेलोलेसिथल की सेंट्रोलेसिथल, टेलोलेसिथल,
अगर ये पूरा साइड में है यॉक टेलोलेसिथल, देन क्लीवेज जो होगा वो एक साइड में होगा कि पूरा चारों तरफ से होगा? एक साइड से, क्योंकि एग सपोज टू बी दिस इज द एग, जैसे कि हम बर्ड्स की एग की बात कर रहे हैं, यॉक इज प्रेजेंट इन वन साइड, राइट? तो फिर सेल डिवीजन कहाँ पे होगा? एक साइड में होगा कि पूरा साइड, पूरा चारों तरफ से होगा? एक साइड से हुआ। तो डिस्क शेप हुआ कि नहीं? डिस्क शेप हुआ, इसको बोलते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। क्या बोलते हैं उसको? डिस्कॉइडल क्लीवेज। अरे डिस्क मतलब एक एंड में होता है तो डिस्क होता है, ये एक एंड में क्लीवेज हुआ कि नहीं? दैट इज बाय डिस्कॉइडल। समझे? अगर सोचिए एक एग है जिसमें सेंट्रोलेसिथल है, यॉक इज प्रेजेंट एट द सेंटर, जैसे कि इंसेक्ट में मैंने बोला था, तो फिर यॉक as it is present in the center, so the cleavage will be occurs in all sides. तो ये क्या होगा? उसको बोलते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज। क्या बोलेंगे उसको? मैं खाली कंसेप्ट दे रहा हूँ, लिखूंगा सिर्फ ह्यूमन बीइंग। आपको अगर चाहिए तो आप रिफर कर सकते हैं स्टडी पैकेज। आई थिंक स्टडी पैकेज में भी हटा दिया है, क्योंकि ये सब खाली सुन के समझ के भूलने का चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? याद तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग का ही रखना है। ह्यूमन बीइंग में वर्ड में बता रहा हूँ, इसीलिए ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, टाइम बहुत जाएगा अननेसेसरीली, वेस्ट है, कुछ फायदा नहीं। तो समझ में आया? एक था होलोब्लास्टिक, दूसरा है मेरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक इक्वल, होलोब्लास्टिक अनइक्वल। मेरोब्लास्टिक का दो कैटेगरी, एक है डिस्कॉइडल क्लीवेज एंड सेकंड इज सुपरफिशियल क्लीवेज। बोथ है ऑकर्स इन केस ऑफ पॉलीलिस्टल और मेगालिस्टल एग। बट डिस्कॉइडल किस में होगा? टेलोलिस्टल में। सुपरफिशियल किस में होगा? सेंट्रोलिस्टल। फिर कॉकरोच का कैरेक्टर क्या हो गया? हाँ, सेंट्रोलिस्टल विद सुपरफिशियल क्लीवेज। क्लियर है? So this is holoblastic equal. हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, फिर नंबर 2 में आते हैं। ह्यूमन बीइंग के केसेस में सेकेंड टाइप जो क्लीवेज है, दैट इज इनडिटरमिनेट क्लीवेज। What is the meaning of indeterminate cleavage? Indeterminate means, आप लोग को पता है कि when the cell will divide or zygote will divide to produce the blastula, the blastomeres has the fate fixed or the fate of the blastomere is not fixed. Not fixed. ब्लास्टोमियर का फेट फिक्स्ड नहीं होता है, जॉर्म लेयर का फेट फिक्स्ड होता है कि विच ऑर्गन विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच जॉर्म लेयर। हम लोग इसीलिए अलग अलग चैप्टर में पढ़े हैं कि दिस इज एक्टोडर्मल, दिस इज मेसोडर्मल, दिस इज एंडोडर्मल ऑरिजिन। पढ़े हैं कि नहीं? कहीं पे हम लोग पढ़े कि ये ब्लास्टोमियर ये बनाएगा, ये ब्लास्टोमियर ये बनाएगा, ऐसा नहीं है। मींस ब्लास्टोमियर का फेट फिक्स्ड नहीं होता है, means determinate or indeterminate. That is why in case of higher animals there is no fate fixed for the blastomeres, so indeterminate. लेकिन अगर ब्लास्टोमियर का फेट फिक्स्ड होता तो हो जाता डिटरमिनेट। तो उससे प्रॉब्लम क्या है ना? सपोज भी आपका 32 ब्लास्टोमियर है एंड वो 32 ब्लास्टोमियर से फिक्स्ड है कि कौन सा ब्लास्टोमियर फ्यूचर में कौन सा ऑर्गन बनाने वाला है। अगर वो ब्लास्टोमियर उसका लॉस हो गया, डिटैच हो गया, डिजेनरेट हो गया, डेथ हो गया, then that organ will be not formed in the embryo. That organ will remain defective. Sorry, embryo will become defective. समझ में आ रहा है कि नहीं? And that is the reason why, because of the indeterminate type of cleavage in case of human being, it is possible to have twins. नहीं समझे? ट्विंस जो आइडेंटिकल ट्विंस होता है, कैसे होता है? ये एक पूरा एम्ब्रियो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो गए तो दो एम्ब्रियो बनेगा कि एक एम्ब्रियो बनेगा? क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो आप बोलेंगे कि सर हाफ हो गया, तो हाफ एम्ब्रियो ये बनाएगा, हाफ एम्ब्रियो ये बनाएगा,
तो जरासंध टाइप का हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है भाई कि भाई एक जाइगोट से कैसे दो ह्यूमन बीइंग बन सकता है। एक जाइगोट को डिवाइड करके 16 ब्लास्टोमियर बनाया है, एक ब्लास्टुला, तो एक ब्लास्टुला से एक एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनता है? आइडेंटिकल ट्विंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं कि नहीं? व्हाई सो? इट इज बिकॉज इट इज डेवलप्ड फ्रॉम वन जाइगोट। बाय मींस ऑफ द क्लीवेज दे प्रोड्यूस द ब्लास्टुला, एंड ब्लास्टुला स्टेज में ही ये क्या होता है ना, ये डिवाइड होके दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब सोचिए अगर हमारे केस में डिटर्मिनेट क्लीवेज होता तो जरासंध बनता। अरे है कि नहीं? एक हाफ बनाएगा वन हाफ बॉडी, अनदर हाफ विल प्रोड्यूस अनदर हाफ ऑफ द बॉडी, फिर जोड़ते। अलग अलग। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना, तो पूरा एंटायर बनता है। व्हाई ना? बिकॉज द सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लास्टोमेरिक स्टेज ऑल आर स्टेम सेल्स, ऑल आर टोटिपोटेंट सेल्स। टोटिपोटेंसी मतलब क्या है? इनका कोई फेट फिक्स नहीं है, दे कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेल्स। बात को समझे? इसलिए फीटल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे हैव द टोटिपोटेंसी पावर। जैसे ही ये मैच्योर्ड हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, उनका फेट आ जाएगा। इसी को तो हम लोग मॉडिफिकेशन बोलते हैं। यही सेल मसल्स भी बनाता है, यही सेल नर्व भी बनाता है, यही सेल कनेक्टिव टिश्यू भी बनाता है, यही सेल एपिथेलियल टिश्यू भी बनाता है। Once they will modify, their fate fixed, function fixed. तब तक तो कोई फिक्स नहीं है ना। चलिए, indeterminate cleavage, the fate of elastomeric cells are not fixed. So are totipotent or stem cell. So identical twins can form. And याद रखिए ये जो एग्जांपल है ना इनडिटर्मिनेट क्लीवेज का, ये सारे के सारे ड्यूटेरोस्टोमीज होता है। हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़े थे प्रोटोस्टोमीज एंड ड्यूटेरोस्टोमीज। ड्यूटेरोस्टोमीज में कौन कौन आते हैं? एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट एंड ऑल कॉर्डेट्स। याद है? तो मतलब ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग आ गया। एंड आपका जो डिटर्मिनेट क्लीवेज है जो इसका रिवर्स है, दैट इज फाउंड इन केस ऑफ प्रोटोस्टोमीज। मतलब जहां पे आइडेंटिकल ट्विंस पॉसिबल नहीं है, फेट विल बी फिक्स्ड। अगर आप एक से निकाल लिए, वो सेल जो फ्यूचर में ऑर्गन बनाने वाला था वो नहीं बनेगा, तो एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? कंप्लीट होगा कि डिफेक्टिव होगा? समझ में आ गया? नेक्स्ट वी आर कमिंग टू रेडियल क्लीवेज नंबर 3। The cells of upper and lower tier during cleavage present in same radial axis. मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा देता हूं। This is supposed to be the two tier of cells, upper tier and lower tier. यहाँ पे देखिए upper tier of cells and lower tier of cells present in the same radial axis or different radial axis? Same radial axis.
तो सेम रेडियल एक्सिस में, इसीलिए रेडियल क्लीवेज बोलते हैं। अगर आप सोचिए क्लीवेज के टाइम में सेल्स का मूवमेंट हो, हम लोग का तो सेल्स का डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है, इसीलिए रेडियल होता है। लेकिन आप सोचिए अगर सेल्स का मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट हो तो क्या होगा ना, डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट होगा वो। देन दैट विल एज्यूम लाइक जस्ट स्पाइरली, जैसे रहता है ना ट्विस्टेड टाइप का, वैसे ही दिखेगा। दैट इज इट इज कॉल्ड एज स्पाइरल क्लीवेज। एंड स्पाइरल क्लीवेज ऑकर्स इन केस ऑफ व्हाट ना, इंसेक्ट। तो फिर कॉकरोच का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, स्पाइरल क्लीवेज। और क्या क्या कैरेक्टर मैंने आपको रिपीट किया था, सेंट्रोलेसिथल, देन इट इज सुपरफिशियल क्लीवेज एंड स्पाइरल क्लीवेज। समझ में आ रहा है कि नहीं, याद रखना ये कॉकरोच टॉपिक में आता है। तो ह्यूमन बीइंग में क्या हो गया ना, दैट इज होलोब्लास्टिक इक्वल इंडिटरमिनेट रेडियल। गॉट इट। So now we are coming to the plane of cleavage. ये था type of cleavage. Coming to plane of cleavage. Number one, meridional plane. Meridional plane cleavage passes through animal pole, vegetal pole axis to central axis or through center. तो यहाँ पे थ्रू सेंटर है तो इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, ठीक है ना। सो दिस इज सपोज टू बी द एनिमल पोल एंड दिस इज द एग, एंड यहाँ पे डिवाइड ऐसे ही होगा। देन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लेन ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड एज व्हाट ना, मेरिडियनल प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन बीइंग के केस में ये मेरिडियनल प्लेन होता है। तो मेरिडियनल प्लेन जिसका है उसका क्लीवेज कौन सा होगा, होलोब्लास्टिक इक्वल की होलोब्लास्टिक अनइक्वल, इक्वल होगा। सेकंड प्लेन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में क्या होता है, क्लीवेज passes to animal pole, vegetal pole axis, but not through center. तो ये होलोब्लास्टिक इक्वल होगा कि होलोब्लास्टिक अनइक्वल होगा, सेंट्रल एक्सिस के थ्रू पास नहीं करेगा। तो one will be slightly large, another will be slightly small. So यहाँ पे आप मैक्रोमियर माइक्रोमियर का वर्ड यूज करेंगे, yes or no? Yes. So in case of meridional plane, that is all same type of elastomeres. But in case of vertical plane, it should be macromere and micromere because it is not passes through the center, but it is holoblastic. लेकिन unequal हुआ कि equal हुआ, unequal. Number 3, equatorial plane. Equatorial plane, cleavage passes transversely to center. यहाँ पे एनिमल वेजिटल पोल एक्सिस में पास नहीं करेगा, ये ट्रांसवर्सली पास करेगा लाइक दिस।
लेकिन सेंटर में पास कर रहा है कि लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर पास कर रहा है, तो ये भी इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा? तो ये एनिमल पोल वेजिटल पोल के थ्रू पास नहीं कर रहा है, इट इज ट्रांसवर्सली डिवाइडिंग द सेल्स बट सेंट्रल, तो हियर आल्सो इट इज इक्वल। ये भी होलोब्लास्टिक इक्वल है। अभी मैंने आपको समझ में आया कि उसकी मैं क्यों प्लेन बता रहा हूं, क्योंकि मेरिडियोनल प्लेन एंड इक्वेटोरियल प्लेन बोथ आर होलोब्लास्टिक इक्वल, बट किस प्लेन में डिवाइड हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो होलोब्लास्टिक इक्वल मे बी मेरिडियोनल, मे बी इक्वेटोरियल। एंड द नंबर 4, that is latitudinal or horizontal. Cleavage passes transversely but not through center. तो ये क्या होलोब्लास्टिक इक्वल होगा कि होलोब्लास्टिक अनइक्वल होगा? समझ में आया कि नहीं? तो होलोब्लास्टिक इक्वल का दो प्लेन हो गया, होलोब्लास्टिक अनइक्वल का दो प्लेन हो गया। होलोब्लास्टिक इक्वल का कौन सा प्लेन है? मेरिडियोनल एंड इक्वेटोरियल। तो ये दोनों हो गया होलोब्लास्टिक इक्वल, एंड ये दोनों क्या है? होलोब्लास्टिक अनइक्वल। आई थिंक आपको समझ में आ गया। होलोब्लास्टिक इक्वल का हो गया मेरिडियोनल एंड इक्वेटोरियल, होलोब्लास्टिक अनइक्वल का हो गया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन का रिस्पेक्ट में कैसे क्लीवेज होता है। स्टार्ट करें। हम लोग सीधा स्पेसिफाई अभी करेंगे ह्यूमन बीइंग के केसेस। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज इट ऑकर्स 30 आवर्स, मतलब ये कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मैं यहाँ पे स्टार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट की बात कर रहा हूँ। कब तक फर्स्ट क्लीवेज कंप्लीट हो जाएगा? 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट क्लीवेज, ये सब क्लीवेज नॉर्मली होता कहाँ है? क्लीवेज नॉर्मली होता है फैलोपियन ट्यूब में और ओविडक्ट में, ठीक है ना? क्लीवेज स्टार्ट्स इन द फैलोपियन ट्यूब एंड जब तक हो जाएगा तब तक ये यूटेरस में रीच कर जाता है। मतलब एंटायरली फैलोपियन ट्यूब में जब ये पास करेगा तब उसका क्लीवेज कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है? सो 30 आवर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द फर्स्ट क्लीवेज विल ऑफ। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? इट इज holoblastic equal. Right criteria, meridional plane. Result into two equal blastomeres.
ये है फर्स्ट क्लीवेज का कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी आते हैं सेकेंड क्लीवेज। ह्यूमन बीइंग के केस में सेकेंड क्लीवेज का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कंप्लीटेड 60 hours of fertilization, मतलब 30 hours of first cleavage. It completed 60 hours of fertilization. 60 hours after fertilization, better, right? This is also holoblastic equal. This is also holoblastic equal. समझे कि नहीं? This is also meridional plane, but right angle to first one. कैसे समझे? नहीं समझे? ये एप्पल है। एप्पल ये हो गया एनिमल पोल, नीचे क्या है? वेजिटल पोल। एनिमल पोल वेजिटल पोल एक्सिस में कट करेंगे तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेरिडियोनल। तो फर्स्ट क्लीवेज जो था, दैट फर्स्ट क्लीवेज इज लाइक दिस। समझे कि नहीं? सेकंड क्लीवेज लाइक दिस। तो फर्स्ट भी मेरिडियोनल हुआ, सेकंड भी मेरिडियोनल हुआ, लेकिन सेकंड इज राइट एंगल टू द फर्स्ट वन। उससे क्या होगा? 4 सेल बनेगा कि नहीं? बात को समझे? नींद नहीं आना चाहिए क्लास में। या तो क्लास में आओ या तो घर में रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे क्लास में ये गलती से भी गलती मत करना। तो सेकंड क्लीवेज क्या होगा ना? होलोब्लास्टिक इक्वल मेरिडियोनल प्लेन राइट एंगल टू द फर्स्ट क्लीवेज। चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन और क्लीवेज चल रहा है, आपको नींद आ रहा है, समझिए आपका इंटरेस्ट लेवल कितना है। आपका पढ़ने का जो जो एक्चुअली एक्सप्रेशन है, मतलब जो थॉट है, जो टाइप का जो क्या बोलते हैं उसको, जो इंटरेस्ट है, वो किस लेवल पे सोचिए। थर्ड क्लीवेज में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेकेंड क्लीवेज में एक चीज हम लोग ऐड करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट ऐड करेंगे। इट इज एसिंक्रोनस। Asynchronous means cleavage of the blastomere not occurring at same time. मतलब देखिए, ये है जाइगोट, डिवाइड करके बना कौन सा? 2 ब्लास्टोमियर, राइट? 2 ब्लास्टोमियर के बाद ये 4 ब्लास्टोमियर होगा। So 2 blastomer is because of first cleavage and 4 blastomer because of second cleavage, right? तो second cleavage में क्या होगा ना? पहले तो एक सेल डिवाइड करेगा, तो आपको एक इंटरमीडिएट 3 सेल स्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसके बाद ये सेकेंड वाला सेल डिवाइड करेगा, दैट गिव्स राइज टू व्हाट ना? 4 सेल। एसिंक्रोनस का मतलब अभी देखिए, द क्लीवेज ऑफ द ब्लास्टोमियर्स नॉट ऑकरिंग एट, अगर एक साथ सारे के सारे ब्लास्टोमियर डिवाइड करते हैं तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे होता, लेकिन एक साथ डिवाइड नहीं होता है। सो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज एसिंक्रोनस, नॉट सिंक्रोनस। सिंक्रोनस होता है मतलब एट ए टाइम होता है। तो आपको अब वो टेक्निकल वर्ड एसिंक्रोनस से यूज होता है।
So an intermediate three-celled stage will form, and then four-cell. तो यहाँ पे साइमल्टेनियस नहीं होगा, दैट इज एसिंक्रोनस होगा। तो इसलिए ये टेक्निकल वर्ड यूज होता है सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनी मींस नॉट साइमल्टेनियसली ऑकरिंग, अगर साइमल्टेनियसली होता है तो सिंक्रोनस होता है। क्लियर है? थर्ड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। दिस इज monoblastic, slightly unequal। यहाँ पे देखिए थर्ड क्लीवेज स्लाइटली अनइक्वल हो गया। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल अभी हम लोग पढ़े थे। हॉरिजॉन्टल देखिए तो क्या था, अनइक्वल था कि इक्वल था? हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या था, अनइक्वल था कि नहीं? इसलिए देखो होलोब्लास्टिक अनइक्वल हो गया। और हॉरिजॉन्टल क्या था, ट्रांसवर्स था कि एनिमल वेजिटल पोल एक्सिस था? हाँ। अब देखिए जो फोर्थ सॉरी थर्ड क्लीवेज के जो एंड में कितना सेल मिलेगा आपको? 8 सेल रहेगी नहीं? तो 8 सेल का अपर टायर एंड लोअर टायर हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको 8 सेल का स्टेज दिखाया था रेडियल क्लीवेज में। Upper tier of cell and lower tier of cells present in the same radial axis or different radial axis? Same. That is why radial cleavage. अगर वो अलग अलग जंक्शन में होता तो स्पाइरल। थर्ड क्लीवेज horizontal. It is also asynchronous. Result into 8 blastomeric stage. And fourth cleavage onwards, plane and rate of cleavage is non-specific. इसके बाद फोर्थ ऑनवर्ड्स जो क्लीवेज होगा उसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। वो रेट एंड प्लेन ऑफ क्लीवेज इज नॉन स्पेसिफिक। समझ में आ गया? एंड ह्यूमन बीइंग के केस में सबसे स्लो क्लीवेज रेट होता है। कंप्लीट। So we are coming to the next. Morula, blastula और blastulation लिखिए and implantation. Coming to this part, diagrammatically इसको डिस्कशन कर लेंगे, इजी हो जाएगा। जब ओव्यूलेशन हुआ था, याद है ना टॉपिक? व्हाट इज द स्टेज ऑफ द एग? सेकेंडरी oocyte. Means after the fertilization
सॉरी जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन व्हेन इट इज इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज। आप सेकेंडरी oocyte स्टेज का पूरा स्ट्रक्चर याद किए हैं? याद होगा पूरा। जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा। When the sperm will enter, that will activate the ovum to produce what? The completion of the second meiosis to produce the matured ovum or egg. That is ooted. तो जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट रहेगा कि नहीं आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑल्सो? रहेगा। जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा विल बी प्रेजेंट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑल्सो। यहाँ पे पॉइंट है कि कब तक ये जोना पेलुसिडा कंटिन्यू करेगा एंड कब तक ये कोरोना रेडिएटा कंटिन्यू करेगा। एंड ऑलरेडी मैं बताया हूं कि क्लीवेज डिवीजन इज विदाउट ग्रोथ फेज। तो आप हमेशा याद रखिए जब भी डायग्राम बनाए, जाइगोट से लेके ब्लास्टुला तक उसका साइज हमेशा सेम रहेगा, लेकिन ब्लास्टोमियर का साइज डिक्रीज करेगा। क्लियर है? तो डायग्राम उसी हिसाब से बनाते जाइए। देखिए 3 सेल स्टेज दिखा, ट्रांसिएंट 3 सेल स्टेज। देखो जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। कहां पे होगा मैं बताऊंगा। दिस इज 4 सेल स्टेज। देखिए आप देख सकते हैं normal shape and size of the embryo is constant, but the size of the blastoma is gradually decreasing. Amount of cytoplasm is constant, मतलब remain constant from zygote to blastula, but the number of the nucleus is increasing. इसलिए मैंने बोला था आपको न्यूक्लियो एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो increases gradually as the cleavage progresses. ये हो गया 8 सेल स्टेज। दिस इज कोरोना रेडिएटा। दिस इज जोना पेलुसिडा। दिस इज zygote. This is first cleavage. Second cleavage.
Second cleavage also continuing, results into 4 cell stage. This is 2 cell stage. 3 cell stage. 4 cell stage. This is 8 cell stage. 8 cell stage and the completion of third cleavage. Then that will be 16 cell stage. And जब ये 16 cell stage में रहता है, उसका जो कोरोना रेडिएटा है तब तक इरोडेड हो जाएगा. So no corona radiata when it is comes to the 16 cell stage. Only zona pellucida will be remain. And 16 cell stage में एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं. जस्ट वेट. 16 सेल स्टेज में हम क्या करेंगे ना, सेल्स को थोड़ा सा डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स. 16 सेल में थोड़ा सा चेंज होता है. आपको याद है ना कि LH डिक्लाइन होने के बाद HCG उसका फंक्शन करता है टू मेंटेन द कॉर्पस लुटियम टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी. याद है ना? एंड दैट HCG is secreted from ट्रोफोब्लास्ट. लीजिए बन गया आपका ट्रोफोब्लास्ट. मतलब 16 सेल स्टेज तक आते आते उसका ट्रोफोब्लास्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. एंड ये 32 सेल में आएगा तो ट्रोफोब्लास्ट फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है. एंड दैट मैच्योर्ड ट्रोफोब्लास्ट विल सीक्रेट व्हाट ना HCG. तो ये जो आउटर फ्लैट सेल आपको दिखा, these are actually trophoblast. अभी ट्रोफोब्लास्ट हम लिखेंगे नहीं क्योंकि इसके बाद वो कंप्लीटली फॉर्म होगा. अभी इसको आप गिन के 16 कर सकते हैं. मैंने तो गिना नहीं, शायद ज्यादा हो गया होगा, लेकिन आप लिखिएगा 16 सेल स्टेज. आप चाहे तो 16 गिन के करिए तो बेटर होगा. Here it is. Outer flat cell and this is inner rounded cell. मैंने थोड़ा सा गिना नहीं है, इधर उधर हो गया होगा, वो मैटर नहीं करता है. आप अपना देख के लिख लीजिए. तो आउटर फ्लैट सेल एंड इनर राउंडेड सेल्स. आउटर फ्लैट सेल्स स्मॉल है. एंड रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विथ टाइट जंक्शन. पढ़े थे आप लोग टाइट जंक्शन. लीक प्रूफ की लीकेज. ये लीक प्रूफ जंक्शन है कि लीकेज जंक्शन है? लीक प्रूफ मींस टाइट जंक्शन के थ्रू सेल और सेल के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा. बात को समझ रहे हैं? यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि as because the outer flat cell which are small with tight junctions, there is no communication between the cells, and that is why they do not participate in the formation of embryo. एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट वही करेगा जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा. एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा जंक्शन चाहिए? गैप जंक्शन. एंड दैट गैप जंक्शन इज प्रेजेंट इन बिटवीन द इनर सेल राउंडेड cells. So these are large
with gap junction. That is why inner rounded cell will in future will produce the total embryo, and the outer flat cell with tight junction in between the cell, they will form the trophoblast in future. ठीक है? यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस 16 सेल स्टेज में कोरोना रेडिएटा इरोडेड होता है. यहाँ पे सिर्फ जोना पेलुसिडा होगा. लिख दीजिएगा ये जोना पेलुसिडा है. कोरोना रेडिएटा इरोडेड हो गया ड्यूरिंग 16 सेल स्टेज. The corona radiata eroded by reaching uterus. जब तक ये यूटेरस में रीच करता है 16 सेल स्टेज होता है एंड उसका कोरोना रेडिएटा इरोडेड हो जाता है. एंड इसका ड्यूरेशन कितना होता है, कितने दिन के अंदर ये यूटेरस में रीच करता है ना, 4 to 6 days. आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक को इसके साथ कोरिलेट करिए. 14 डेज में ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद कार्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ, एलएस धीरे धीरे डिक्लाइन किया बिकॉज द प्रोजेस्टेरोन लेवल इज इंक्रीजिंग. 4 to 6 days later ovulation. ओव्यूलेशन के 4 to 6 डेज के बाद याद करिए, मतलब 20-21 डेज आ गया. 20-21 डेज तक प्रोजेस्टेरोन लेवल पूरा हाई हो जाएगा, एलएच पूरा डिक्लाइन कर जाएगा. एलएच डिक्लाइन करेगा तो कार्पस ल्यूटियम अनेबल टू मेंटेन, एंड बाय दैट 4 to 6 days this trophoblast will completely to be formed. मतलब ये यूटेरस में पहुंच गया, उसके बाद trophoblast फॉर्म हो जाएगा. जैसे ही वहां पे एलएच डिक्लाइन किया है, यहाँ पे एससीजी सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा. एकदम टाइमिंग का खेल है. अगर टाइम के हिसाब से ये सब कुछ नहीं हुआ तो ये इम्प्लांटेशन नहीं होगा. समझे कि नहीं? प्रोजेस्टेरोन अगर डिक्रीज कर गया तो इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं होगा, एंडोमेट्रियम रप्चर कर जाएगा एंड अबॉर्शन हो जाएगा. तो इसीलिए अननोइंगली, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, अननोइंगली फीमेल के अननोइंगली बहुत ऐसे होता है कि प्रेगनेंसी जो है लॉस हो जाता अननोइंगली, क्योंकि इतना स्मॉल होता है एम्ब्रियो का साइज कि वो निकल जाता है यूरिन के थ्रू, पता ही नहीं चलता है. बात को समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं. यूटेराइन एंडोमेट्रियम secrete nutritive fluid which provide nourishment to embryo. Which provide nourishment to embryo, converted into converted it into blastula. 32 cell stage. अब हम 32 cell stage देखते हैं. बाहर रहेगा ट्रोफोब्लास्ट, फ्लैट सेल्स हो गया.
अंदर हो गया लार्ज इनर सेल मास। सेल का साइज और डिक्रीज किया कि नहीं, लेकिन एम्ब्रियो का साइज अभी तो कांस्टेंट है। We cannot say it is a blastula, although it is a 32 cell stage, but it cannot be said as a blastula. Blastula इसके बाद होगा, blastula with blastocell, right? But यहाँ पे blastocell दिख रहा है आपको, अभी तक blastocell फॉर्म नहीं हुआ है, अब फॉर्म होगा blastocell. This is zona pellucida. This is trophoblast. This is inner cell mass. And as already told you, this inner cell mass टोटिपोटेंट होगा कि बोले होगा कि नहीं टोटिपोटेंट? So that is why the inner cell mass will future में ये total embryo बनाएगा, and so it is also called as embryoblast. So embryoblast is formed the embryo in future, that is why it is called as embryoblast, and these are actually rounded cells present in the in center, that is inner cell mass. तो ये होता है totipotent. So this is, we can say, blastula forming. The blastula formation start हुआ 32 cell stage. इसका जो नेक्स्ट डायग्राम है, आप इसमें क्या करेंगे ना, थोड़ा सा साइज को बड़ा करेंगे। थर्टी टू आप गिन के करिए, नहीं करिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस डायग्राम शुड बी परफेक्ट। देखिए यहाँ पे ब्लास्टोसेल डेवलप हो गया, ठीक है, ब्लास्टोसेल डेवलप हो गया। दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल नोब। Why it is called as node? आपको समझ में आ रहा है कि नोब एक स्ट्रक्चर है, that is why it is called as embryonal node. And ब्लास्टोसेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उस फ्लूइड का नाम क्या होगा? ब्लास्टोसिलिक फ्लूइड। And this blastocilic fluid secreted by trophoblast. Blastocilic fluid secrete कौन करता है? Trophoblast secrete करता है. So this is trophoblast. और ये secrete करता है HCG. फर्स्ट तो ट्रोफोब्लास्ट सीक्रेट करेगा, उसके बाद प्लासेंटा भी फॉर्म करेगा, तो HCG का सीक्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। एंड दिस इज जोना पेलुसिडा। अभी तक देखिए जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर वी कैन से ब्लास्टुला। एंड इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग द ब्लास्टुला इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। याद रखिए, blastocyst is the name of the blastula in human being. As because blastula is of different types: stereoblastula, discoblastula, coeloblastula.
बहुत सारा टाइप का ब्लास्टुला है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के केस में जो ब्लास्टुला है उसका नाम क्या है? ब्लास्टोसिस्ट, रिमेंबर। अब देखिए होगा क्या, एकदम बढ़िया चेंज होगा इस टाइम में। साइज इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? साइज इंक्रीज करने से उसका प्रेशर किसके ऊपर आएगा? जोना पेलुसिडा के ऊपर उसका प्रेशर आएगा कि नहीं? जोना पेलुसिडा हम लोग पढ़े थे, इट इज एसेल्युलर नॉन सेल्युलर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, याद है? अब इसका कंसेप्ट यहाँ पे आ गया कि when the size of the blastula will increase, the pressure falls on the zona pellucida and that zona pellucida will be stretched. स्ट्रेच होने से क्या होगा ना, एक जगह पे जोना पेलुसिडा का एक पोर फॉर्मेशन हो जाएगा, होल फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड उस पोर के थ्रू ये टोटल एम्ब्रियो क्या होगा ना, स्क्वीज होके बाहर निकल जाएगा। अब तक जोना पेलुसिडा है, अब इसके बाद देखिए जोना पेलुसिडा से वो बाहर आ जाएगा, the embryo will be comes out of the zona pellucida as the size is increasing of the embryo gives rise to pressure fall on the zona pellucida will stretch to create a pore, and that through pore the embryo will be squeezed out just like diapedesis in case of WBC. अब this is the right time when it is coming out of the zona pellucida, हो सकता है कि कभी-कभी ये पूरा एम्ब्रियो एंटायर रहे, एंड कभी-कभी हो सकता है कि एम्ब्रियो डिवाइड होके दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। अगर दो पार्ट में कन्वर्ट हुआ तो आइडेंटिकल ट्विंस होगा कि नहीं? सो आइडेंटिकल ट्विंस का पॉसिबिलिटी सिर्फ इसी टाइम में ही बनता है। दिस इज द स्टेज कॉल्ड एज ब्लास्टुला, व्हेन इट इज कमिंग आउट ऑफ द जोना पेलुसिडा, दैट इज द चांसेस ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस कैन बी ऑकर इन दिस टाइम ओनली। क्लियर है? अब जैसे ही जिसका जोना पेलुसिडा निकल जाएगा, अब एम्ब्रियो हो जाएगा फ्री। अभी तो एम्ब्रियो कैप्सुलेटेड था ना, समझ में आया? एम्ब्रियो हो जाएगा फ्री, अब बनेगा इम्प्लांटेशन। जब तक जोना पेलुसिडा है, क्या इम्प्लांट कर पाएगा वो? सब टाइमिंग का खेल है। causing so on zona pellucida causing a pore through which embryo comes out. Now the embryo is ready for implantation. Question पूछेगा what is the stage in which the implantation is occurs? कौन सा स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है? ब्लास्टोसिस्ट। We are discussing about the human being. So at which stage the implantation occurs? Na blastocyst. Just I told you. ये क्रिएट होगा एक पोर, उसके थ्रू ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो ऐसे स्क्वीज होके ऐसे बाहर निकल जाए। This is the embryo, the cells. And there must be possibility that entire embryo अगर entire embryo हुआ then one individual हुआ। अगर ये डिवाइड कर गया then gives rise to what? Identical twins.
और मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब इसका रिवर्स क्या है? डाइजाइगोटिक ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। तो डाइजाइगोटिक मतलब टू जाइगोट, टू ओवरी विल प्रोड्यूस टू ओवम एट अ टाइम। हम लोग क्या पढ़े? अल्टरनेट ओवरी प्रोड्यूस करता है ना एवरी मंथ में। कभी कभी ऐसा होता है कि both the ovary will release the ovum at a time। तो क्या होगा? दोनों फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर दोनों फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है तो टू बेबी विल फॉर्म। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्विंस? ट्विंस का डेफिनेशन क्या है? प्रेगनेंसी ऑफ टू एम्ब्रियो एट ए टाइम। At a time, two embryo is growing inside the uterus, then it is called as twins. Twins जरूरत नहीं है कि आइडेंटिकल ही हो। ये डेफिनेशन हो गया ट्विंस, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। क्लियर है? तो मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक में और क्या डिफरेंस है? मोनोजाइगोटिक में सेम सेक्स ऑलवेज, आइदर ब्रदर ब्रदर और सिस्टर सिस्टर, राइट? क्योंकि मोनोजाइगोटिक है ना। लेकिन डाइजाइगोटिक में हो सकता है कि मेल मेल हो, फीमेल फीमेल हो, या तो मेल फीमेल भी हो। समझे कि नहीं? आप अंदाजा लगाओ, मैंने आपको ट्रिक समझा दी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द इम्प्लांटेशन ऑनवर्ड्स। हम लोग मोरुला ब्लास्टुला से कंप्लीट कर लिए, इम्प्लांटेशन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।